Welcome back to part 2 of machine learning overview. In previous lecture, we discussed about what is machine learning, the definition of machine learning, the difference between AI, ML, and DL. We discussed about supervised machine learning, unsupervised machine learning, and reinforcement learning. In this lecture, we are going into further details about these topics. But before going into their details, let's have some overview about the approaches that are being followed in AI. If we talk about AI, we used to have, let's say, four approaches in definition of AI, like thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, and acting rationally. So if we talk about this thinking humanly and acting humanly, we are more focused towards the strength of human, such as being human. We have cognitive neuroscience, introspection, which is basically psychological experiments, and brain imaging. We already discussed about these things, such as we have NLP, knowledge representation, and so on and so forth. They are part of acting humanly, and so on and so forth. And if you talk about these parts here, rationality, so we have rationally thinking rationally and acting rationally, which is if we talk about acting rationally, this is more relevant towards rational agents which operate autonomously, perceive environment, persist over a long period of time, and create and pursue their goal. So if we talk about such type of rational agents, they basically perceive from the environment with the help of different sensors, such as LiDAR or different sensors and cameras, and then they perform different actions. They do some processing based on provided logic behind it, whether it is rationality and different things, and based on that they perform different actions on the environment. They perceive from the environment and they perform actions on the environment. Okay. So in machine learning, we discussed that instead of learn from the data instead of being programmed explicitly. This is the definition of machine learning, and that the tasks that are performed in machine learning are the output from the task that is performed by machine learning. The output can be either categorical, it means that is classification and classification task, and second one is continuous. If the outcome is continuous, it means the task that is performed is of regression. Okay. So our target of such agents is they should adapt and over time, and they should provide better and better results by learning from the data or by learning from the experience. We also discussed about these three definitions in previous part 1. So basically AI is the ability of machines to function like human brain, so that they can mimic human behavior, and the focus on AI is basically the essential part, that is learning, reasoning, and self-correction based on the provided input. Machine learning basically it enables to learn automatically from their previous experience on the data, and we have different statistical algorithm, and we mostly apply machine learning on a structured data. But if you talk about deep learning, it solves more complex problems, and it works on unstructured data. If we think about machine learning, it works on structured data. We'll discuss about structured and unstructured data in next slides. It deals with huge and diverse amount of data. We discuss about machine learning and deep learning differences. In machine learning, we provide features, but in deep learning, feature extraction process is done by deep learning itself. Basically, machine learning is intersection of stats, linear algebra, and computer science. The fundamental algorithms that are being applied and used in machine learning, their fundamentals are based on linear algebra and stats. So it's highly recommended to all students to revise basic concepts relevant to linear algebra and stats before working on machine learning algorithms. If we talk about the learning process of any machine learning, there are different steps being followed from left to right.
First thing first is basically what we are trying to achieve, what is our objective and what is our goal. And for that, for sure, to achieve that objective, we must have some data. So but you know all that our real world is very much uncertain, and there must be some issues with the data, such as data might have null value. Some pre-processing must be required, so pre-process the data, and maybe if the data is in a string format, we may convert it into maybe in numerical format by using different techniques such as one-hot encoding or something. And then once the data is prepared, then we select a relevant model. Maybe if it is a classification, we apply any classification algorithm. If it is a regression, we apply a regressor, and then finally we get the results at the output. So this is generic machine learning process. We can apply it. We can apply this on any supervised or unsupervised machine learning algorithm. Okay. So this is the popular definition of machine learning by Arthur Samuel, and he gave this definition in 1959, that it's machine learning is basically field of study that gives computers the ability to learn without being explicitly programmed. This is very popular and a standard definition of machine learning by Arthur Samuel. And basically Arthur Samuel worked on a checkers board game. Essentially he didn't know how to play this game, so he programmed he created a program to play this checkers game. And the program that was the algorithm to play this game was maybe developed by Samuel, and that program basically played tens of thousands of times this game, and eventually it improved himself, and it improved and made himself a better and better version of itself by learning and iterating multiple times through this checkers game. So that's why it gave a definition based on this experience. Samuel gave it a name, और Samuel ने फिर ये नाम दे दिया इस जो है मशीन लर्निंग को, कि भाई मशीन लर्निंग बेसिकली इसमें क्या है कि हम रादर दें खुद एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करें, उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद लर्न करे. ये उसने एक चेकर्स गेम में को उस प्रोग्राम ऐसा बनाया जो इस चेकर गेम को टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइम खेलने के बाद अपने आप को इम्प्रूव करते करते उस पूरी गेम को सीख गया. हालांकि सैमुअल को गेम खेलना नहीं आती थी, तो उसने एल्गोरिथम भी ऐसा बनाया कि उसको कहा कि आपको भी गेम खेलना नहीं आती, लेकिन एल्गोरिथम में फिर ऐसी चीज़ें थी जो कि वो खुद अपने आप को रूल्स सीख रही थी. सीखते सीखते बाय प्लेइंग अगेंस्ट अपोनेंट अपने आप को इम्प्रूव करते करते वो एल्गोरिथम ये गेम पूरी सीख गया. तो दैट्स वाई सैमुअल ने ये फिर मशीन लर्निंग का ये जो डेफिनेशन ये दी. इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, और उसमें अगर डिफरेंस देखें तो ट्रेडिशनल प्रोग्राम में हम इनपुट देते हैं, लॉजिक देते हैं और डेटा देते हैं, और हमें आउटपुट में रिजल्ट्स आते हैं. तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हमारे पास इनपुट देते हैं, डेटा देते हैं और रूल्स देते हैं या प्रोग्राम देते हैं, तो वहाँ से आउटपुट में हमें आंसर्स मिलते हैं. लेकिन मशीन लर्निंग करता है कि मशीन लर्निंग में हम क्या करें, हम रिजल्ट्स जो वहाँ पे रिक्वायर थे, रिजल्ट्स यानी कि आउटपुट, यानी कि डेटा इज़ इनपुट, रिजल्ट्स इज़ आउटपुट, इनपुट और आउटपुट दोनों दें, तो वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उसको उस डेटा के अगेंस्ट आउटपुट का पैटर्न क्या होगा वो खुद रूल्स जो है प्रोग्राम या रूल्स या पैटर्न्स वो मशीन लर्निंग खुद समझ लेगा एल्गोरिथम. तो दैट्स व्हाई इट्स डेटा एंड आंसर्स, उस इनपुट डेटा के अगेंस्ट आंसर्स कंप्यूटर को दें और उसके अगेंस्ट रूल्स की मैपिंग वो एल्गोरिथम खुद कर लेगा. जैसा कि सैमुअल ने कहा कि हम उसको जो ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है वो दे रहे हैं, और इस केस में आंसर्स कैसे दे रहे थे कि अपोनेंट उसके अगेंस्ट खेल रहा था, तो फिर उसने खुद रूल्स सीख लिए बाय इम्प्रूविंग इटसेल्फ, उसको समझ के खेलते खेलते और इम्प्रूव करते करते खुद सीख लिया और एक्सपर्ट प्रोग्रामर बन गया. ओके तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे आर्थर सैमुअल की है. तो उसने चेकर गेम बनाई जिसमें उसने आपको इम्प्रूव किया. तो माई मशीन लर्निंग मेथड्स इज़ बेसिकली मोस्ट सॉफ्टवेयर नाउ यूजेस मशीन लर्निंग एट स्कोर परफॉर्म हैंड कोडेड जो है वो सच जो है हैंड कोडिंग हार्ड कोडेड हम प्रोग्रामिंग नहीं करते. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, सो इट हैज़ टू थिंग्स. वी गिव इनपुट to the algorithm and algorithm provides us the output. Okay,
So here are different applications of machine learning such as spam filtering, speech recognition, machine translation, online advertising, self-driving cars, and visual inspection. Spam filtering is basically we give input as an email, and the output of machine learning algorithm can be whether the email is a spam or not spam, not spam or spam. So this is a binary classification task. In speech recognition, we give input as audio, it converts that audio into a text. हम इनपुट ऑडियो में देंगे और उसको टेक्स्ट में ट्रांसक्राइब करके दे देगा. मशीन ट्रांसलेशन में हम एक लैंग्वेज इनपुट दें और आउटपुट में दूसरी लैंग्वेज में आउटपुट आए. इंग्लिश दें, आउटपुट में सिंधी आ जाए या उर्दू आ जाए. ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में बात करें, कोई एडवर्टाइज में दें और यूज़र की डेटा दें और वो फिर उसके बारे में बताए कि उस यूज़र ने उस एडवर्टाइज पे क्लिक किया या नहीं, तो हमारी एडवर्टाइजमेंट सक्सेसफुल थी या नहीं, या हमें एडवर्टाइज स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए. सेल्फ ड्राइविंग कार में हमारे पास इमेज और रेडार है, तो बताएगा कि बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड इनपुट कार की पोजीशन कहाँ है. विजुअल इन्फेक्शन में हम जो है इनपुट फ़ोटोज़ दें जो है स्मार्टफोन के, और वो जो है विजुअल इंस्पेक्शन करके बताए कि वो जो स्मार्टफोन है वो फॉल्टी है या नहीं. ओके. अगर फर्दर बात करें एआई के लेक्चर के कंटेंट की, नेक्स्ट वीक्स में और क्या हम पढ़ेंगे, तो हम अभी पढ़ रहे हैं एआई के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओवरव्यू पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे दैट विल बी रिग्रेशन, उसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री को इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट वी विल गो टूवर्ड्स फीचर सिलेक्शन प्रोसेस, एंड देन फिर रेगुलराइजेशन की टेक्निक्स पढ़ने के बाद परफॉर्मेंस एवल्यूशन मैट्रिक्स सच एज हमारे पास ट्रेंड टेस्ट, स्प्लिट, क्लास वैलिडेशन. इफ इट इज़ क्लासिफिकेशन तो एक्यूरेसी, F1 स्कोर, सेंसिटिविटी, प्रिसिशन, रिकॉल वगैरह. और इफ़ इट इज़ रिग्रेशन तो उस हिसाब से रूट मीन स्क्वायर, मीन स्क्वायर एंड डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे. क्लस्टरिंग वी हैव के मीन्स क्लस्टरिंग, तो उस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम और उसके डिफरेंट प्रैक्टिकल टिप्स को डिस्कस करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल आल्सो कवर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन द सेकेंड लास्ट वीक ऑफ दिस कोर्स, और उसमें इसको बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस करेंगे. उसमें ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे. उसमें वेट्स और बायासेस को अपडेट कैसे करते हैं, वेट अपडेट और बायास अपडेट का पूरा यानी कि बैकवर्ड प्रोपेगेशन और फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि एक फंडामेंटल ऐसा समझे कि स्टार्टिंग पॉइंट है डीप लर्निंग का आफ्टर मशीन लर्निंग. तो हम इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे. ओके. If we talk about the difference between back to let's say machine learning, so if we talk about the data, we have structured and unstructured data. We discussed in definition that machine learning mostly work with structured data and deep learning work with unstructured data. So this is kind of an example of structured data. It's kind of we have rows, let's say 1 to 22 rows, so 2 to 22 yani 21 records are there, 21 instances are there, and 1 2 3 4 5 6 or 6 columns or 6 features are there, and each cell contains a single value. It's similar like we have a table in a database, so this we call it a relational database, or we have a structured data. On the other hand, in unstructured data, we can have data such as images, we can have textual data, we can have videos, audios, emails, social media content from Facebook or different social media platforms, or data from different sensors that are attached to our robotic or some agents or different devices. Okay. So for such type of unstructured data, we can use this data and apply deep learning models, and for such type of data that is structured data, we can apply machine learning algorithms. Okay. If we talk about this structured data further, we have this example that is this is basically iris data. This is basically iris data set in which we have if I can give you an example, let me show you the example. Iris, sorry,